भाई मैंने सुना ऐसा विल बी to that. And now, ladies and gentlemen, जिनकी पीठ का हर कोई दीवाना है, वो तारा या दिशा नहीं, नीलेश भाई का सच्चा प्यार, अर्जुन कपूर। He's gonna kill me after this, but that's okay. सबको बाबा बोलो रे, छत्ती पे आके नीलेश भाई तो। Welcome भाई, so good to see you. आइए। And now, ladies and gentlemen, जिनके चक्कर में नागपुर वालों के कान एकदम और मुंह एकदम खुला का खुला रह गया, सबकी शामत आ गई। Give it up for तारा सुतारिया। अब आया जोश। And now हमें बुलाई क्यों रखा है यार? आप ही लोग कर रहे हो। Can we make some noise for Disha Patel? All the villains of 8 Villain Returns, ladies and gentlemen. It's time for you guys to go click, click, click. मोबाइल जमा कर लो, आगे आ जाएगा। Yeah, we'll have a quick photo op for you guys. और उसके बाद I love you, right? अच्छा, all of you. मुझे बोला I love you, right? The nation wants to know where have you been? इतना दिन से क्यों करते आप? प्रमोशन में क्यों नहीं दिखे? I had a prior appointment मेरी फिल्म तेहरान में शूट है। सबको लग रहा है कि यार ये भी विलन हो सकते हैं, ये भी विलन हो सकती है और सर भी विलन हो सकते हैं। एक तरफा प्यार है, there's action जैसा आपने देखा अभी, there's such beautiful women, there's so much talent in this film, so I think it's a combination of everything. It's just not a whodunit film के फिल्म के बाद आप बाहर निकल के आप बोल के ये विलन है या वो विलन है, तो ये इस किस्म की फिल्म नहीं है। Valentine's Day पे, sorry, Valentine's Day पे promotions पे नहीं दिखे, and you made sure that you are only promoting this film like with these two wonderful and gorgeous beauties. और ये पता है मुझे किसने इल्जाम लगाया है? वरुण धवन ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि मैंने जॉन की टिकट कैंसिल करवाई ताकि मैं दिशा और तारा के साथ प्रमोट कर सकूं ये फिल्म। मैं आज कह रहा हम तीनों को छोड़ के चले गए कि तुम हवा को गर्म करो थोड़ा, फिर मैं आऊंगा और एंट्री लूंगा। तो बिल्कुल वही हुआ है। आई एम सो हैप्पी टू सी जॉन इज बैक। आई थिंक इसका प्रमोशन हैंडसमता सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर, ऑफ कोर्स। या and not to forget the content, So Nitin found the handsome quite interesting. Nilesh, sorry, Nilesh. wrong connection. तो गाने के ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ एक्ट्रेस चलो। I don't know about that, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिएक्शंस मिले हैं टू शामत, of course to गलिया, to दिल, to the whole film, जो ट्रेलर्स के हमें रिएक्शंस मिले हैं, they have been really overwhelming. मेरी पहली बार है कि मैं खुद के लिए गा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, and I cannot tell you how grateful I am for your response to Shamat. I just want to thank everybody who's watching. Let's go! अवार्ड वाली फील आ गई मुझे तो यहीं खड़े खड़े। दिशा, प्लीज टेल अस, you're playing it cool, एकदम काम में आते हो, कुछ करके निकल जाते हो, अब वो बच्चों की तरह लॉलीपॉप हो या कुछ और हो, लेकिन एवरी टाइम यू ऑन द बिग स्क्रीन, लग रहा है कि यू आर द वन, विलन तो आप ही हो। तो ऐसा है कि चुपके से आके काम करके निकल जा रहे हो? आई थिंक जो लोग अंडरडॉग रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, यूजुअली वही लोग ऐसे साइकोटिक किलर होते हैं। आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग मिसिंग है, हमारे प्रोड्यूसर्स मिसिंग है। ये तो कहाँ घुमा दिया आपने? So, as you know, they are the real villains. All right, फिलहाल के लिए ladies and gentlemen, they are the villains जिन्होंने आपके दिल पे कब्जा किया हुआ है। Give them a big round of applause. And one thing before I ask them to ask their questions, dialogue बाजी, content और वो जो शिद्दत है वो काफी एविडेंट है इसके ऊपर, तो उसके लिए congratulations. Thank you so much. Thank you. It's over to you guys. Come on, shoot your questions. वेव कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाय, मैं माइक तक लेके जाऊं? नीलेश, धरती पे आ जा, चल। जी
हाँ जी पहली बात पूरी एक विलन रिटर्न्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए. थैंक यू सो मच. Thank you. मेरा सवाल अर्जुन दोनों से आपसे, जॉन सर आपसे भी और अर्जुन आपसे भी. पहले मैं आपसे पूछूंगा अर्जुन, ट्रेलर इज ऑलरेडी देयर, सॉन्ग्स हैव बीन हिट, सो क्या जरूरत लगी एक सेकंड ट्रेलर निकालने की? बिकॉज डोंट यू थिंक दैट वी आर गिविंग अवे टू मच? But I think we need to also understand that not everybody sees everything. We should always engage every audience member. जब आप एक फिल्म प्रमोट करते हो, आप सिर्फ इस शहर में नहीं या सिर्फ इस मीडिया के लिए नहीं बनाते हो, आप आम देश के आवाम के लिए बनाते हो. कई बार किसी ने ट्रेलर ना देखा हो, गाने देखे हो. कई बार किसी ने ट्रेलर गाने देखे हो और पसंद किए हो, लेकिन दे वांट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी. I think we should not ever fear. It is not about having anxiety that we're giving away too much. Imagine how much we have, that we have the confidence to put out even more right now and still not have any answers available for you. So I think it shows the quality of what we have. And this is just 1 minute. The trailer was 2.5. So हमने 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर बनाई, आपको 2.5-3 मिनट ही दिखाए हैं. I don't think it's ever a bad idea to put more material out there as long as you do it well. And I think आज का जो ट्रेलर है, it kind of just sets even more interesting context to a lot of questions जो हमें मीडिया से ही पूछे जा रहे हैं. So it's always nice to be able to allow more intrigue, more questions being asked. आप सोचते हो कि आपको पता लग गया क्या हो रहा है पिक्चर में, और वो अच्छी बात है ताकि we can actually surprise you when you come and watch the film. So that's always a good thing. जॉन सर मेरा आपसे सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड टू सी यू. Yeah, John, it's very good to see you. Okay, before My accusations of Arun Dhawan can end now. Before asking you a question, let me acknowledge the fact that I really like Attack. It was one of those smartest, slickest actioner of recent times. Thank you, I really appreciate that. Thank you. Okay, so my question to you is, sir, being an action star, how do you look upon to this trend where जब भी एक action film आती है, whenever there is this action genre that has been tried in Bollywood, there it is always under the radar, it has been scrutinized heavily, but on the other hand, when similar action sequence happen in a pan-India film, they got appreciation, तालियां सीटियां बजती है. I have an example. जैसे सत्यमेव जयते 2 में there was a scene where you lifted a bike. वो that was question, but वही चीज जब जूनियर एनटीआर ने RRR में किया, that was appreciated. What do you want to say about it? I think audience is king. You have to respect the audience for what they appreciate and what they don't. And for an actor or an entertainer, it's important for us to accept criticism, put our head down, and go on to our next project. So I'm not negative about this. You must look at everything very positively. So that's all I can say. But yeah, I think if I'm speaking about action, I think Attack has probably amongst the best, if not the best action this country has seen. So I'm just really proud of that. Thank you. विलन आप हैं, हमने सुना ऐसा. हाँ? विलन आप हैं. आपने ऐसा सुना ट्रेलर देखने के बाद? यार आओ ना, 29 जुलाई को हमारी फिल्म लग रही है. अभी सिर्फ 6 ही दिन बचे. आज सैटरडे है. जब तक फिल्म लगेगी 6 दिन और इंतजार कर लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. और विलन कौन है हम चारों में से, वो जानने से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटिंग ये है कि हम क्यों विलन हैं और हमारी कहानी क्या है, और हर किरदार जो हम निभा रहे हैं, चारों किरदारों के पीछे क्या कारण है कि हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं. उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें एक तरफा प्यार बोल लीजिए, उसमें एक पागल पर एक जुनून बोल लीजिए, वो किस तरह हावी होता है हमारे सारे कैरेक्टर्स पे, वो आई थिंक देखना इज इक्वली एक्साइटिंग. आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जर्नी है, जिस सवाल की वजह से आप अंदर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है जो 2 घंटे 10 मिनट में बार बार बोल रहा हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में जो आपको वो जर्नी मिलेगी, जहाँ पे आपको जैसे जॉन ने कहा, मोहित सूरी की फिल्म है, म्यूजिक है, रोमांस है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इट्स नॉट ओनली 2 men going against each other, it's also the women, what they're doing and how they're involved in taking the story forward. So I think क्लाइमैक्स जो आप चाहते हो कि एक आंसर मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप देखें और एंजॉय करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कैरेक्टर्स के साथ होता है, आई थिंक दैट्स इक्वली एक्साइटिंग एंड इक्वली एंटरटेनिंग, व्हिच इज व्हाट वी ऑल एस्पायर टू मेक इन दिस फिल्म. सो आई होप आपको जवाब भी मिले और आप एंटरटेन भी और बार-बार जाके देखो. हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से. मेरा सवाल आप सबसे रहेगा. एक अभी जो प्रोमो दिखाया गया उसमें डायलॉग है, हीरो के लिए हीरोगिरी ज़रूरी है, बट आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट से लेकर सिनेमा तक जो बदल रहा है, तो जॉन एंड अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हीरोगिरी के मायने अब क्या है? He wants to know हीरोगिरी के. I think मेरे लिए मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को हीरो मानना चाहूँगा, आई थिंक इट इज द वे यू बिहेव विद पीपल, इट इज द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ. आप एक औरत की इज्जत किस तरह करते हो, आप बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हो,
आप जब उन लोगों से मिलते हो जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकते और किस तरह बर्ताव करते हो उनके साथ. आई थिंक अ ट्रू हीरो इज समबडी एंड दैट कुड बी फॉर मेल और फीमेल. आई एम सेइंग इट इज हाउ जिस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वो आपकी हीरोइज्म होती है या इसीलिए आप हीरो जाने जाते हो. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग डीड्स. हर बार वो बड़ी चीज होना जरूरी नहीं है कि हीरो होने का मतलब है कि हम कुछ कर दिखाएं. रोजमर्रा की जिंदगी में इट्स simply being respectful, kind and decent. I think that is lacking a lot sometimes in our world today. And I think if you can achieve that on a daily basis, we are all heroes in one way or another. Hi, this is Harshita here from Screen. जॉन आपके लिए I think it's a good question. He gave a very good answer. Genuine. I think he gave a very good answer. मुझे पता नहीं कि MC जितने के अर्जुन है. That is fantastic answer. Genuinely, I'm not just saying it. He's given a fantastic answer. आप अभी तेहरान की शूटिंग करके आ रहे हैं ईरान से. शायद उसमें दावा किया गया कि इंडिया की शायद पहली फिल्म वहाँ पे शूट हो रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? I have not yet gone to Iran, but I'm definitely going to go to Iran because मेरे जो grandfather है, from my mom's side, he came down from Iran. So we are Iranis from my mother's side. तो मैं जाना चाहूँगा and I would like to take my mother also क्योंकि मेरे mom के 21 cousins हैं ईरान में, so I would like to take her. Hi, this is Harshita here from Screen Grafia. तारा एंड मुझे आपको पूछना था कि जब आपके दो हीरो एक्शन का पार्ट संभाल रहे थे तो आप दोनों का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था? आप कुछ कर रही है एक्शन वाइज? क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म आई थिंक आपने शायद ट्रेलर के अंत में शायद देखा होगा कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है और जो ऑब्वियसली रोल्स हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते बट देयर इज डेफिनेटली लॉट्स टू डू मैम. I think it's a very unique film in that way. And I think I can speak for Disha and myself, and of course she'll tell you more as well. But it's unfortunately I think this kind of role isn't given to women very very often, and I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully in the industry where women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? I think whatever Tara said is completely true. ये अच्छा भाई. It's a Mohit Suri's film, and it ensures that girls are strong not just physically but also mentally, and as you can see, emotionally in every way possible. And yeah, you'll see much more when you see it on the 29th of July. So I like the chemistry in between both of you. Thank you. There's even more Between Tara and Disha, between these two. with the girls, right? Yeah. Yeah, I think a lot of people are enjoying the chemistry between Tara and Disha. I think John, you and me can leave now. Let them take over. अर्जुन और जॉन आपसे पूछना चाहूँ अच्छा, इनके पूछो। नहीं एक सेकंड क्वेश्चन. आप दोनों ही एक्शन के लिए माहिर हैं, तो आपका जब एक्शन का कोरियोग्राफी चल रहा था तो किस तरह से आपने उसको मतलब खुद का इनपुट था कि जो मास्टर बताते हैं वही किया आपने? I think first you should follow the director's vision जो डायरेक्टर चाहते हैं क्योंकि एक इमोशनल थ्रस्ट होना चाहिए एक्शन सीक्वेंस में. सबसे जरूरी है कि आपके कैरेक्टर्स क्यों एक दूसरे से फिट रहे. एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू से दिस. जब हम एक्शन करते हैं एज एक्टर्स एज हीरोज व्हेन वी आर डूइंग दिस वी हैव अ स्टंट टीम. वी हैव ऑल दोस फाइटर्स दैट मेक अस लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन. मैम जेन्युइनली आई थिंक हम कोरियोग्राफी सीख लेते हैं उनके साथ रिहर्सल करते हैं कि गो आउट देयर वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं. दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर दैट वी लुक गुड. So full credit to them firstly, regardless of the film. इस फिल्म के लिए हमेशा I just want to say एक्शन जैसी चीज को ज्यादा कई बार इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती बिकॉज लगता है कि सब मस्ती हो रही है. It's a very serious thing to be able to do action because especially जब दो एक्टर एक साथ लड़ते हैं we have to also take care of each other. गुस्सा दिखाने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. And I think I'll take this opportunity to say that the first thing when John Abraham came on set to do the action sequences because we are supposed to hate each other. But we don't, and the good part is that he knows me for a while and he is tha. When he came on set, he just took me camera. They were setting up and everything. हमने सब technicalities कर ली थी. He just stood and he said, Arjun, no matter what happens, safety is above all else. We don't need to injure each other or ourselves at the cost of giving the best shot because we can do a retake. But if you get injured or you injure me, it'll just put a spanner in the works in the bigger picture. And I think that is a very respectful thing to do as an experienced actor to come in and put me at ease that I don't need to go all out to try and prove to him that I'm acting like I'm angry or vice versa, that he's not going to come into my space to try and dominate and make me feel insecure about it. So I think full credit to having a co-actor like him who's very secure, who's very kind and who's very straightforward on the first day of an action sequence to say that puts a young actor at ease. हाँ मैंने action जरूर किया लेकिन एक दूसरे एक्टर्स के साथ भिड़ने के पहले you need that confidence that you're all on the same page. So director है, stunt team है, we listen to everybody, but at the end of the day there is a chemistry that you also need to create with your fellow actor. And he
I think deserves full credit for creating that with me, because मैं चुपचाप शायद कर भी देता. But the fact that he gave me that allowed me to be comfortable and confident with him on and off screen both. I also feel any kind of action, however good it is honestly immaterial. It's the emotion that's backed by the action that makes it special. And I think the emotion in this film is so special that the action looks good. तारा क्योंकि आप अच्छा गाना गाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा गाना गाने से लोग पिघल जाते हैं, तो ऐसा होता है? हाँ, जो मेरे चेहरे पे पसीना है वो इनके गाने की वजह से ही है. एक्चुअली रोज जब मैं इवेंट्स में जाता हूँ, ये गाना गाती है इसलिए पसीना आता है. उसमें ह्यूमिडिटी और लाइट्स का कोई वो नहीं है. तारा स्टॉप सिंगिंग, इट्स कॉजिंग पिघलना टू हैपन. विलेन को आप हीरो में कन्वर्ट कर सकती हैं, ऐसी कुछ कला है आपके? आपके गले में वो ताकत है कि आप किसी विलन को गा के हीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं. आस्किंग डू यू हैव दैट पावर विद योरसेल्फ? काश ये पावर होता, but I don't know. I think we'll have to wait for 29 July to see कि मेरी आवाज में and in all the songs क्या ये पावर है या नहीं. यहाँ भी हम सुनेंगे कुछ एक लाइनें आपकी जुबान से. अच्छा, सीधा मुद्दे पे आना. इतना घूम के आया था तू. एक गाना हो जाए, एक लाइन. एक गाना पूरा मैं गाने का पागल हो गए. कुछ भी. हाँ बोलना है. लेट्स गो तारा. लेट्स गो तारा. तारा चारा 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 चारा. ओके ठीक है, चलो. चलो 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 भाई चलो. तेरी गलियां 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 मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां. तुम सब पिघले कि नहीं? पिघले? मैं तो पहले से पिघला हुआ. Hello, Isha. This is Manish. Hi, Samir here from Movie Talkies. My question is to Isha and Tara. So आज का जो promo मेल बॉडीज को ज़्यादा फीचर करता है और फीमेल्स को थोड़ा सस्पेंस में रखता है. Even in the trailer, you two are in the suspense. So don't you think there should be one promo featuring you? That's a good idea. आप मार्केटिंग टीम की तरफ आओ जरा. कहाँ पे आप मूवी टॉकीज नहीं, आप हमारे बालाजी टी सीरीज के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाओ. कम. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. बहुत बढ़िया आइडिया है यार. I think मैंने भी सुना था. चला जा. दोबारा मौका नहीं मिलेगा. इट्स नॉट अ बैड आइडिया. आई थिंक वी शुड कंसीडर इट. और अभी कोई बोल रहा था कि इतना ट्रेलर क्यों दिखता है, तो देखो, see what it is. It's so interesting, right? You can create so much of conversation around just 1 minute of content. Yeah, hi, Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Good evening to everybody. I have two questions. The first question is for all four of you all. It's a light-hearted question. So obviously, keeping in the spirit of the Valentine's Day. So अगर hypothetically speaking, अगर एक ऐसा मौका आया on Valentine's Day, where all four of you all have to pick one famous villain to date. So starting with the lovely ladies, आप किस You mean a fictitious character? Yeah, a fictitious from a film. If we had to choose to go on a date. Or even if a popular villain from the Bollywood industry or any other industry. So starting with the ladies, if you'll have to go date a noted villain on Valentine's Day, who would that be? I think, sir, I am very, very fond of this gentleman who I've worked with in my second film, Marjava. He was also an Ek villain. I think I would have to invite Ritesh Deshmukh. He's just the villainy, and I think I'd love to have him as a date for Ek villain returns. Mogambo, Khushua. Arjun and John, sir, for both of your brand, अगर विलन हमको वैम्प भी चूज करना जरूरी नहीं, आप अपने चूज कर सकते हैं विलन को. क्या अभी जॉन इधर खड़े तो ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन क्या धूम की फ्रेंचाइज के जितने हीरोज हैं उनको डेट करने का मन करता है कभी-कभी, बिकॉज़ ऑफ हाउ अट्रैक्टिव दे लुक इन अ फिल्म. सो आई रिमेंबर जब धूम देखी थी, आई थॉट जॉन वाज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, एंड देन फॉर मी धूम 2 में जो ऋतिक रोशन लग रहे थे, I did have a small crush on him. So as a villain, I think I would go out on just to hang out with Hrithik Roshan. I would go out on a date with him. What about you, John, sir? John, would you like to
No, you missed the boat. I chose John and Hrithik. It's a menage a trois. John, would you like to, like if you have to go out on Valentine's Day, who would you pick as your villain lead? I can't think of anyone right now. I really can't. If I think of somebody, I'll let you know. Last question for Isha. Just looking at your young career so far, when we look at you, you are this divine beauty, and then some of the roles which you've done, they might kind of border on femme fatale. So is this something which, what attracts you to the, for a beauty like you to, what attracts you to these kind of roles? You're the femme fatale. अरुण कल इंटरव्यू कर रहा था, सवाल ही नहीं निकलता था उसका। तारा, ओ दिशा, ओ अभी तो इसको दिशा। तो सेम आंसर तुम कॉपी पेस्ट करो चलो। हम दिशा को सिखा रहे थे वही तुम चलो। सर आप डिसाइड करो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे विलेन वर्सेस विलेन फीमेल वाला आएगा ना, आप ये सवाल फिर से पूछ लेना। These roles. So to be honest, I'm assuming because of Tadaf and now. Yeah, no, I think it's just so much fun. Sometimes it's good to be bad, sir, and I think it's nice to have the opportunity to do that. I'm very new to this industry, but I think it's more exciting and fun to do something unexpected than your run-of-the-mill heroine roles, which we've seen a dime a dozen in the last many decades of this industry. So I think since we're changing, the industry is changing so rapidly. I think it's just more exciting for us as the young ones to take the baton forward and just do something different with our skill and our talent and make our voice heard. I think it's about time. Hi, Rashida here from People in the center. So my question is to Tara and Disha. Don't you feel that actresses are finally getting very meaty parts, as Arjun said, that Ek Villain Returns is not about two men fighting, it's also about the two ladies and why they are the villains, the four of them. So, firstly, what do you think took so long for finally seeing actresses up there doing the action, doing meaty roles, and how much did the role excite you personally? Well, I think once the perception of the audiences changes, the industry will change. It's all about people coming in, watching your films, and I feel like once audiences accept us as, the powerful ones, the strong ones, it'll automatically, everything will just fall into place. And I think I am somewhere, I feel like now spending so much time with Mohit sir that I am somewhere twisted in my head. And, and I feel like that sort of thing that I had in my head came into life through this character. Fantastic, Tara. Ma'am, I think it's got a great deal to do with having a conversation about something that perhaps makes us uncomfortable as a society or as a people. And I think over the last few years, women have had a voice and had their voices heard. And I think the fact that we can sit here today as a group of people in a room and just have this conversation, it just makes it more interesting and more exciting for us. And the fact that we can have that conversation makes it more possible to have these roles. My next film, Apurva, that I just announced very recently, is speaking on this very subject about powerful, strong women and having their voice heard. So I think for sure there are more scripts for young actors and young women today, and I think it's great. It's about time. हेलो हाय अर्जुन सर मेरा सवाल आपके लिए है क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं आग लगा दिया कौन है करियर में अपना हर कैरेक्टर इतनी शिद्दत से प्ले किया है आई लव इट किधर से है भाई सवाल प्यार पे है तो कहते हैं कि प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस फिल्म में भी ऐसा ही प्यार दिखाया गया है तो सर इज इट पॉसिबल रियल लाइफ में भी किसी के साथ होने के लिए उतना ही शिद्दत से कोई हद से गुजर सकता है ये पॉसिबल है रियल लाइफ के लिए भी सीरियस है तो मुझे तो तेरे से हो गया कुछ
सालों से तारीफ की आदत नहीं थी, तुमने जिस तरह की कौन है उसको खड़ा करो जरा दिखा। दुनिया जो चाहे कहे, मैं तो शिद्दत से ही करते रहूंगा। क्या अब मैं सच में पिघल गया और इसमें तारा की सिंगिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर एक्चुअल में आई लव यू सो मच। आई लव यू। सॉरी, रेखा सुथार फ्रॉम रेडियो अड्डा। रेखा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स। जो आपने कहा वो एक एक्टर यही सुनना चाहता है 10 साल के करियर में, जो आपने कहा दैट आई वर्कड हार्ड। सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। आई लव यू अ लॉट। टू आंसर योर क्वेश्चन, you know, the thing is, it's very difficult to say कि आप शिद्दत से प्यार कर सकते हैं नहीं, because जब आप प्यार में होते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हो। कई बार उसमें कुछ रह जाता है या कुछ वर्कआउट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे ईमानदारी से या शिद्दत से नहीं किया। निजी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं, या आप जो पर्दे पे देखते हैं वो एक कहानी है जिसमें दी एंड आता है। हम जब किसी से प्यार करते हैं हमें निभाना भी पड़ता है, और वो शिद्दत से निभाना भी जरूरी है। प्यार करना आसान है, उसे निभाना, the circumstances are always going to change, evolve, and in today's society even more so, because you need to allow your partner to feel comfortable and confident and allow them to be. So I would like to say यार, शिद्दत से प्यार करना मतलब एक दूसरे को इज्जत देने के साथ साथ you should be able to enjoy the bad along with the good, and I think that is the most important part in society today, that sometimes we are not able to go through with love. I think that is the most amazing thing. If you can fall in love and go through the bad days also, that is the true shiddat in mohabbat, if you call it. I'm sorry to butt in. I'm sorry, I don't do this usually. I love you के बाद जो बाकी बोला समझ में आया कुछ? कुछ नहीं. She's like blank. I love you हो गया. जी. Next, we'll take 2 more questions, yeah. जी. ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ सर। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है। उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और काफी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, because the thing is you should be allowed to be yourself. He is that way. मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज को करते हैं without being himself. कोई दिखावा नहीं है उनमें। आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं एज मीडिया। व्हेन ही कम्स इन, there's warmth, there's enjoyment, there's energy. उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है, उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया। उन्हें सही लगता है इस वक्त to be in that way that he wants to be. He wants to celebrate being comfortable in his own skin, and I think we should respect that. Having an opinion is fair. I think trolls को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए। Full credit to the boy if he's very happy doing what he's doing. If he's not being forced into it and it's not being done in a wrong way or a crude way, you should respect that. He's allowed to do what he wants to do and be happy. And he's making people happy by doing that also. अर्जुन सर। जी सर। जी मिश्रा सामना से। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए, बहुत सिंपल सा जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही है। अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है। साउंड गया, साउंड ऑडियो। अच्छा, they don't want this. लाइट गया। टाइम खत्म हो गया, इतना ही दिया था टाइम। नहीं, but I would like to answer it properly so we can end it. माइक साउंड। लाइट गया, बैटरी खत्म हो गया सर। मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस नहीं सर, हमें इंडियन डाल दो। ठीक है, तो माइक मैं आखिरी जवाब देता हूँ, फोटो ऑफ कर लेंगे। यस Genuinely, sir, I think it's a worldwide thing. You have to understand the audience today wants to see films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and he's doing Top Gun. Sorry. Time pass. Yeah, so you have Fast and the Furious. आप Top Gun भी देख लीजिए। इतने सालों बाद वो फ्रेंचाइज फिर से शुरुआत हुई और उसमें टॉम क्रूज ही हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप एक फिल्म भी देखिए, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे ले जा रहा है। अगर कोई स्टूडियो है या प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो बेशक हमें करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज। इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कैरेक्टर and we can actually make you have more fun coming to the theater.
दैट हैज नथिंग टू डू विद कि हमारे पास कंटेंट नहीं है. ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर. पहला चला वो तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है. तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन. अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो. I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and has done well. So there is no harm in considering it. I think you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी franchise बनाई और उसकी वजह से कितने लोग entertain हुए. तो ऐसा नहीं. I think सिंघम देखेंगे part 2 बनी, उसके बाद सूर्यवंशी में आया किरदार. So the world is a place today where you can actually enjoy characters entering each other's spaces, universes, and Hollywood is a big starting point of that if you look at it. So I think if you have to ask the question, it is audience driven. Audience enjoys it. Hindustan की audience भी Avengers को उतना enjoy करती है because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very long answer. जी प्रीति एक मिलियन रिटर्न जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है सॉन्ग्स को लेकर या फिर ट्रेलर को लेकर बोला जाए. जानना चाहूंगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड. मेरा गला दुख रहा है. अच्छा पटाएगा देखे. Moment while promoting the film, if you had a moment, nicest fan moment. So I have a lot of these young fans and I do love them a lot, and wherever I go I do see them, and yeah, I'm just very glad like I get to meet them in person now finally. वो साइड में ही रहते Getting out of my house a little more, and yeah, I just love them a lot. लव यू दिशा. क्या बात है. सबको रिप्लाई करो. चलो 1 to 1 बाद में चलो. फर्जी है. हम सबके लिए we've been very lucky. हम बहुत सारे सिटी टूर्स पे गए हैं एंड आई थिंक हमारे सारे पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं बाय सो मेनी फैंस जो स्केच करके हमें देते हैं ऑन स्टेज. सो दैट्स बीन रियली नाइस कि हम we've been to अहमदाबाद, नागपुर, पूना, we're going to Delhi, so many other places as well. And I think जब वो टाइम निकाल के पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हमारे लिए या नोट्स लिखते हैं, that's very very special. मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए. मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ओके लाइफ I guess for every good tattoos, जो you know, so someone does something like that cannot be taken off. That means a lot. लेकिन that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know what your worth is rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? कोई अच्छा बोलेगा you feel very good, कोई बुरा बोलेगा you feel very bad. Don't let that affect you. Thank you. No? Thank you. And the digital media is filled with all this. Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. और वो रिक्लाइनर में जो पड़े हुए हैं 4 लोग, तो मैं देख रहा हूँ मैं बहुत देर से. 29 जुलाई जाना है, ऐसे एंजॉय करना है फिल्म. It's time for a quick photo op, ladies and gentlemen. क्या लगा था अजय देवरकुंडा. देवरकुंडा खाली में से अरे जेरॉक्स निकाल के लेके